Dear students, in this topic we shall discuss the physiological anatomy of mammalian ear. Ear is the organ of hearing that detects sound in particular frequency range. Human ear can detect sound frequencies lying between 20 to 20,000 hertz. The ear of the mammals has three major divisions. Number one, the external ear. Number two, the middle ear. And the third division is the inner ear. These three parts of ear are designed to conduct sound waves through three different types of media. External ear जो है ये एयर से साउंड वेव्स को रिसीव करता है. उसके बाद सेकेंडली जो बोन है, मिडल ईयर है, इसमें बोन्स हैं और मिडल ईयर में जब साउंड वेव्स पहुंचती हैं तो वो बोन्स की वाइब्रेशन का बायस बनती हैं. इस तरह से सेकेंड मीडियम जो है दैट इज द बोन. और थर्ड, जब वेव्स साउंड वेव्स इनर ईयर में पहुंचती हैं तो वहां पर कॉक्लिया में फ्लूइड मौजूद है और उस फ्लूइड की वाइब्रेशन होती है. एज ए रिजल्ट साउंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्लूइड मीडियम. इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ ईयर जो है इसमें साउंड को तीनों मीडिया से गुजारा जाता है और फिर इस साउंड की परसेप्शन करता है मैमल्स का ईयर. नाउ वी शैल डिस्कस द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ ईयर इन डिटेल. First, we shall discuss the external ear. The external ear includes three main parts. First is the pinna. It is also called auricle. ये जो बाहर वाला कान है जो हमें नजर आता है, this is the pinna. Then there is an external auditory meatus. Ear के अंदर जो कैनाल जाती है, that is called the ear canal or external auditory meatus. The third part is the tympanic membrane, जिसे eardrum या कान का पर्दा कहते हैं. These structures act as a funnel that collects the sound waves from environment. As a result, ये जो structures हैं, they amplify the sound and concentrate the sound onto the eardrum. जो आखिरी हिस्सा है एक्सटर्नल ईयर का, सारी साउंड उस पे कंसंट्रेट होती है. एज ए रिजल्ट दैट वाइब्रेट्स. नाउ वी शैल डिस्कस द मिडल ईयर. द मिडल ईयर कंटेन्स थ्री ऑडिटरी ऑसिकल्स, दैट इज थ्री स्मॉल बोन्स ऑफ द ईयर. फर्स्ट इज द मेलियस, सेकेंड इज द इनकस, एंड थर्ड इज the stapes. These three bones are arranged in a series. On one side, malleus is attached to the eardrum, while on the other side, stapes is attached to the oval window of cochlea. The middle ear receives sound waves as vibrations from the eardrum and transmits them to the oval window of cochlea, passing through the three bones of middle ear. The middle ear also amplifies sound waves. Middle ear में जो sound waves की amplification है वो तकरीबन 20 folds होती है या इससे भी ज्यादा होती है. Now we shall discuss the inner ear. Inner ear consists of a bony labyrinth, which is filled with perilymph. It has an oval window and a round window. Oval window receives the sound vibrations through stapes. Bony labyrinth के अंदर there is the membranous labyrinth. This membranous labyrinth is filled with endolymph.
The membranous labyrinth consists of 3 parts. First, it contains 3 semicircular canals, and secondly, it contains the vestibules, that is sacculus and utricles. ये जो 2 हिस्से हैं ये वेस्टिबुलर apparatus बनाते हैं और सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व हैं. जबकि जो तीसरा हिस्सा है that is the cochlea, which is involved in hearing. Cochlea is the part which transduces the mechanical energy of sound vibrations and converts them into electrical nerve impulse.